Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Rajadanarandana Yashodanandana Rajadanarandana Jamuna Tira Krishna
Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Stotra Satya Sri Srimad, whose divine grace
Srila Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Iskcon Devotee Founder Acharya's Divine Grace of the Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Harinama Sankirtan ki Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatirandasya Gyanandhana Samakaya Chaksurandalitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami iti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Pastyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'd like to request everyone may kindly fold their hands and repeat the following two short mantras. सभी से निवेदन है कृपया अपने हाथ जोड़िए और ये दो श्लोक रिपीट कीजिए महाराज के पीछे हाथ जोड़िए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Om Surabhyai Namaha. Mukham karoti vasalam pangvam langayate girim yatkripatamaham bande Sri Gurum Dinatharanam yatkripatamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki, Jai Sri Prabhupada ki, Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki. I am very honored and very pleased to be here on the invitation of His Holiness Bhakti Prem Maharaj. Maybe he's not here now. Is he here? Maharaj is here? Anyways. Oh, I see, okay, yeah. Anyways, I'm still very pleased that Maharaj invited me to give a short discourse today. मैं आप सभी के बीच यहाँ पे बहुत ही प्रसन्न और सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ
और महाराज ने मुझे अवसर दिया कि आप सभी के बीच यहाँ पे कुछ व्यक्त करूं। Actually, I had seen Maharaj a few times, and but today was the first time I actually spoke with him, believe it or not. मैंने महाराज को कुछ बार देखा है, लेकिन पहला अवसर था जब मैंने उनसे बातचीत की। I had been to Ujjain when His Holiness Bhakti Charu Maharaj was hosting some kind of leadership conference some years back. कुछ साल पहले मैं उज्जैन में आया हूँ जब श्री श्रीमद भक्ति चरण महाराज कुछ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे। And I came to know today that at that time Bhakti Prem Maharaj was there, but we never connected. और मुझे ये आज पता चला कि उस समय भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी वहाँ पे थे, लेकिन हमारा आपस में कुछ आदान प्रदान नहीं हो पाया था उज्जैन में। My first visit to Ujjain, I had never been to Ujjain actually until Bhakti Charan Maharaj invited different devotees, and I was very pleased and very impressed by the wonderful facilities that were constructed and made available to the devotees. Yeah. तो मेरे उज्जैन में जब मैं पहली बार गया था, श्री भक्ति चरण स्वामी महाराज ने बहुत सारे भक्तों को आमंत्रित किया था और मुझे काफी अच्छा लगा जो वहाँ पे उज्जैन के भक्तों ने जो सुविधाओं का आयोजन किया था और जिस तरह से उन्होंने आतिथ्य किया। His Holiness Bhakti Charu Maharaj was that perfect host, receiving all the devotees very nicely and taking personal care, giving personal attention to all of mostly his god brothers, at that time. श्री श्रीमद भक्ति चरण स्वामी महाराज एक पूर्ण रूप से दक्ष मेजबान थे। वो जो भी भक्त वहाँ पे आए थे उनको खुद वो लेने जाते, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखते, विशेष रूप से उनकी देखभाल करते। मुख्यतः उनके गुरुभाई थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका आतिथ्य किया। And Maharaj had arranged for all of us to visit that place. Since most of you are from Ujjain, I think many of you, Bhakti Charu Maharaj had arranged that we visit the ashram, Sandipani Muni ashram. Yeah. तो श्री भक्ति चरण स्वामी महाराज ने हमारे लिए उज्जैन दर्शन का भी कार्यक्रम रखा था, जिसमें सांदीपनि मुनि आश्रम हम लोग गए थे। And all the different leaders had gone to there's a pukur, where the bathing pond, pond. तो ज़्यादातर हमारे जो बड़े लीडर्स थे, वो लोग नहाने के लिए भी घाट गए थे। Yes, and so it was a very wonderful experience to visit Ujjain and to again get the association of Bhakti Charu Maharaj at that time. उस समय उज्जैन दर्शन का और भक्तों के संग रहने का बहुत ही अद्भुत अनुभव हमको प्राप्त हुआ। And I think it was mentioned how way back my connection or relationship with Bhakti Charu Maharaj goes back many years when he first came to Srila Mayapur in the summer of 1976. Yeah. और मैं सोचता हूँ कि जब मेरा परिचय दिया गया तभी बताया गया कैसे मेरा भक्ति चरण स्वामी महाराज से संपर्क था। 1976 जब वो पहली बार मायापुर आए थे। Our movement was still very young, and in India we did not have many Indian devotees as full-time devotees. और हमारा मतलब उस समय बहुत ही काफी नया था अभी भी, और भारत में हमारे पास पूर्ण समर्पित ऐसे भक्त ज़्यादा नहीं थे। And especially we did not have many educated young Indian full-time devotees. और विशेष रूप से हमारे पास शिक्षित युवक, भारतीय युवक जो पूर्ण समर्पित हो ऐसे बहुत ही कम थे। Immediately all of us could understand he is someone special. तुरंत ही हम उनको देख के समझ गए कि ये कुछ विशेष भक्त हैं। And I remember just even after a few days after arriving, Bhakti Charan Maharaj
who was a new bhakta at that time, within a very short time he was requested, actually he wanted to actually surrender, and within a very short time actually he shaved up and became a full-time devotee. तो मुझे अभी याद है कि श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज गाली गुरु हो सकते हैं, तो वे कुछ ही दिनों में वो बहुत ही समर्पित थे और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना हेड शेव कर लिया और पूरी तरह आंदोलन में समर्पित हो गए. And he was actually waiting in Srila Mayapur to meet. He had come to Srila Mayapur actually to meet Srila Prabhupada, but Prabhupada was not there. वास्तव में वे मायापुर आए थे श्रीला मायापुर श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए, श्रील प्रभुपाद उस समय यहाँ पर नहीं थे. He had to wait quite a few months. Actually, he had to wait till there was a Kumbh Mela, I believe, in January of the next year, 1977, at which time he met Srila Prabhupada. तो उन्हें कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ा. लगभग जनवरी 1970 में जब कुंभ मेला था, तब उन्हें श्रील प्रभुपाद से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ. And immediately Srila Prabhupada, upon meeting with this new devotee, could immediately recognize here is a young, educated Bengali person who is very serious about surrendering his life to Krishna consciousness. और श्री प्रभुपाद गुरु महाराज को देखते ही ये पहचान गए कि यहाँ पर एक बंगाली शिक्षित नौजवान युवक है जो कृष्ण भक्ति में बहुत रुचि रखता है और कृष्ण को जीवन समर्पित करने को पूरी तरह तैयार है. And although Bhakti Charan Maharaj came so late, he came late considering that Srila Prabhupada started the movement way back in 1966. So we're looking at, 10 years, 11 years later. But this is an example of how at whatever time one may come to Krishna consciousness, the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the mission of Srila Prabhupada is such that there is unlimited service to be taken up. तो हम देखें बाहरी तौर पे तो गुरु महाराज आंदोलन बहुत देर से आए. श्री प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया 1966 में और वे 10 साल बाद 1976 में जुड़े. लेकिन श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के उदाहरण से हम ये समझ पाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कब जुड़ते हैं. चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में ऐसा आयोजन है कि हम जब भी जुड़े हम बहुत ज्यादा सेवाएं कर सकते हैं. So our movement is still very young. The International Society for Krishna Consciousness is still very young, and there are so many preaching opportunities for anyone who is joining our movement. तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ अभी भी काफी नया है और जो भी आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए प्रचार करने का भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं. Yes, so I was very fortunate to get the good association of Maharaj. Of course, he did not stay in Mayapur for a long time. He was given some responsibilities immediately, practically. I think the same day he met Srila Prabhupada, Srila Prabhupada told him, "You should translate my books in Bengali." Yeah. तो मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि गुरु महाराज का संग मुझे प्राप्त हुआ. मायापुर में फिर वो ज़्यादा समय तक नहीं आ पाते थे क्योंकि श्री प्रभुपाद ने जैसे ही पहली ही भेंट में श्री प्रभु को आदेश दिया कि मेरी पुस्तकों का बांग्ला भाषा में अनुवाद कीजिए. So although not everyone can join as a full-time devotee and fully surrender oneself in a temple, Krishna consciousness is such that as instructed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, wherever we may be, we can actually fully surrender in whatever service or condition or situation we may find ourselves. तो हालांकि हर भक्त पूर्णकालिक भक्ति के रूप में अपना पूरा जीवन अपने वाले के समर्पित नहीं कर सकता है, लेकिन कृष्ण भावना इस तरह है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जहाँ भी हम रहते हैं, किसी परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ पर रहकर हम शरणागत होकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं. The full-time devotees are not all living in our temples.
पूर्णकालीन भक्त वे नहीं है जो केवल मंदिर में रहते हैं. Just like small example, just a few days ago, yesterday was the disappearance of Ramananda Rai. जैसे अभी कल की बात करें, कल श्री रामानंद राय की तिरुभाव तिथि थी. And we know from the teachings of Lord Chaitanya how Ramananda Rai was a very advanced devotee, although a family man, a grihastha, and having some work with the government. और भगवान चैतन्य की शिक्षाओं से हम जानते हैं कि रामानंद राय जो थे वह एक महान भक्त थे, भले ही वे गृहस्थ थे और सरकारी सेवाओं में उच्च पद पे नियुक्त थे. We have many examples of house soldiers similar to Ramananda Rai who were living not in a temple, but they were fully dedicated to preaching the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो हमारे साथ बहुत सारे उदाहरण हैं चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में कि वे गृहस्थ थे लेकिन वे कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में पूरी तरह समर्पित थे. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, as we know, was very pleased and greatly appreciated the level of transcendental realization, so much so that he requested Ramananda Rai to leave his, to retire. He was about to retire, and to join him in Jagannath Puri. तो जैसा हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों के आत्म साक्षात्कार या भक्तों की भक्ति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने रामानंद राय को आदेश दिया कि आप ये सरकारी नौकरी को त्याग दीजिए और पूरी तरह मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए. Yes, and that famous conversation, of course, between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda, whereby Lord Chaitanya instructed Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kainenai Jai Krishna Tattva Veta Se Guru Hoy. Whoever is knowing the Krishna Tattva, the science of Krishna consciousness, he can become Guru or teacher. तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद का भी विशेष एक संवाद आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, स्थापित करते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शुद्ध के नाय जय कृष्ण वेता से गुरु है. कोई व्यक्ति चाहे सन्यासी हो या शुद्ध हो, लेकिन जो कृष्ण विज्ञान पर जानता है वही वास्तव में गुरु है. The whole world is actually waiting, because the whole world is lacking, is very much in need of teachers, Krishna conscious teachers, teachers who know about dharma, who know about Sanatan dharma. तो पूरा विश्व इस समय इंतजार कर रहा है क्योंकि वास्तव में पूरे विश्व में कमी है शिक्षकों की, ऐसे शिक्षकों की जो कृष्ण विज्ञान को जानते हैं, सनातन धर्म को जानते हैं. The Lord descends in the material world, as we know, as instructed in the Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya saduskritam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge, to re-establish the principles of dharma. जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने के लिए. So those who want to be the true followers of the Lord, they need to actually understand the mission of the Lord and become actively engaged in that mission of the Lord. तो जो वास्तव में भगवान के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हैं, उन्हें भगवान के आंदोलन को समझने की आवश्यकता है और फिर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपने आप सक्रिय योगदान देने की आवश्यकता है. Yes, the whole world actually is suffering. Srila Prabhupada was mentioning how his Guru Maharaj once told that actually the only thing missing, the only thing lacking in this world is a lack of Krishna consciousness. इस समय पूरा विश्व कष्ट भोग रहा है और श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद को एक बार बताया कि वास्तव में इस विश्व में एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत की. Even one person, even one devotee in some remote village, even one person who becomes a devotee, the effect of that person becoming a devotee permeates
and benefits the entire village. यदि कोई गांव के एक सुदूर क्षेत्र में भी यदि एक व्यक्ति भक्त बनता है तो उस भक्त के जो भक्ति का प्रभाव है वो पूरे गांव में स्थापित हो जाता है. We cannot understand the power, the immense power and influence and effect of someone, even one person who becomes a sincere devotee. एक भी जो निष्ठावान भक्त बनता है उसकी शक्ति का, उसकी भक्ति का जो प्रभाव है हम उसको समझ नहीं सकते हैं. And that is why Srila Prabhupada in the early days of the movement, he would encourage devotees, he would actually send devotees. He would look at the map and say, okay, we need to have devotees to be, you go to this country, you go to that country, even you go alone to that country. इसलिए हम देखते हैं आंदोलन की शुरुआती दिनों में श्रील प्रभुपाद ने भक्तों को अलग जगह भेजा. वे नक्शा लेके बैठते थे, ठीक है इस देश में तुम जाओ, इस देश में तुम जाओ, यहाँ तक कि अकेले ही उन्होंने भक्तों को अलग जगह पे भेजा. And this way many devotees actually received this mercy actually of Srila Prabhupada to be like pioneers in introducing Krishna consciousness in different countries around the world. तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में अलग-अलग भक्तों को कृपा प्रदान की जिसके द्वारा वे अलग-अलग देशों में कृष्ण भक्ति स्थापित करने में अग्रणी बने. Srila Prabhupada one time explained, we generally people, they want to see God. Can you show me God? Can I see God? That is the general mentality. श्रील प्रभुपाद एक बार समझा रहे थे कि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं भगवान को दिखाइए, क्या भगवान दिखा सकते हैं? ज़्यादातर लोगों की मानसिकता ऐसी है. But Srila Prabhupada very nicely explained, we should not be so anxious to see God. We should be anxious that God sees us engaged in His service. श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें भगवान को देखने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए. हमें इस तरह सेवा करना चाहिए कि भगवान हमको देखें. Because the activities of bhakti, this also Prabhupada explains, bhakti is such a thing, it's such an attractive feature, such an attractive activity that it even is more powerful. Even Krishna, who is the all-attractive personality, even that personality is attracted by bhakti. क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति का जो गुण है, भक्ति इतनी आकर्षक है कि जो भगवान कृष्ण हैं, जो सर्व आकर्षक हैं, वे भी भक्ति के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं. Yes. So therefore, the best way to actually attract the mercy of the Lord, to attract the attention of the Lord, is to very nicely, very sincerely engage ourselves in different activities of devotional service. तो वास्तव में भगवान का ध्यान आकर्षित करने का, भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भक्ति में सेवा की अलग-अलग गतिविधियों में अपने आप को लगाएं. Yes. And as nicely described by Srila Rupa Goswami in the Nectar Devotion, as soon as we actually take up this process of bhakti, when we sincerely take up this process of devotional service, it brings immediate relief from all types of material anxieties. तो जिस तरह से रूप गोस्वामी ने बताया है कि हम जब निष्ठापूर्वक भक्ति में कार्य में अपने को लगाते हैं तो तुरंत ही हम सारी भौतिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं. Everyone in the material world is full of anxiety, cannot be avoided. इस भौतिक जगत में हर कोई चिंताओं से पूर्ण है, उससे बचा नहीं जा सकता है. Because the majority of people are on the bodily platform. क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं शारीरिक स्तर पे हैं. But when we cultivate this knowledge of Krishna consciousness, this is one of the first instructions given by Lord Krishna to Arjuna. We are not these bodies, right? Dehi and Deha. We come to know the difference between the Deha, the body, and the Dehi, the resident of the body, the spirit soul. तो जब हम कृष्ण भावना का अनुष्ठान आरंभ करते हैं तो ये पहला सिद्धांत जो भगवान कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं कि
देह और देही के अंतर, देह मतलब ये शरीर और देही मतलब इस शरीर के अंदर जो रह रहा है आत्मा. This is actually the beginning of knowledge. Knowledge is explained also in the 7th chapter of the Bhagavad Gita as being able to differentiate between matter and spirit and knowing the origin of both. तो ये है ज्ञान की शुरुआत है. जिस तरह भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी बताया गया है कि ज्ञान का अर्थ है चिन्मय और जड़, इस वस्तु के अंतर को समझना और इन दोनों का स्रोत क्या है उसको भी समझना. So therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu is described, as we all know, as the most munificent incarnation who has appeared in this world to give what has never been given before to humanity. जैसा हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु परम महावदान्य अवतार हैं जो इस जगत में प्रकट हुए हैं वो देने के लिए जो आज तक मनुष्यों को पहले कभी प्रदान नहीं किया गया. So all that we need to do is actually receive this blessing, receive this knowledge, cultivate this knowledge, this, as described by our Acharya, this Bhakti Lata Bij. When we come in contact with devotees, we should know this is very rare and we are most fortunate. तो हमें बस यही करने की आवश्यकता है, इस आशीर्वाद को, इस ज्ञान को हम प्राप्त करें, इसका अनुशीलन करें. ये है भक्ति लता बीज. और जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं. Brahmanda Brahmite kono bhagyavan jiva Guru Krishna prasadi paye this Bhakti Lata Bij. So all of us, everyone who is here, has at some point come in contact with devotees. To come in contact with devotees is very, very special. तो इस तरह जहाँ भी जो भी लोग यहाँ उपलब्ध हैं वे कभी न कभी किसी तरह भक्तों के संपर्क में हम आए हैं. और भक्तों के संपर्क में जब आते हैं तो बहुत ही विशेष हमारा संयोग होता है. We were just reading in the Srimad Bhagavatam how unless one comes in contact with a Vaishnava, actually he cannot become a Vaishnava. तो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे थे कि जब तक कोई किसी वैष्णव के संपर्क में नहीं आता है तब तक वो वैष्णव नहीं बन सकता है. And we should also know, we should also understand that without this contact of Vaishnava, we cannot know about the process of bhakti, and without knowing the process of bhakti, we cannot become lovers of Krishna. तो हमें ये भी समझना चाहिए कि भक्तों के संग के बिना हम भक्ति की विधि को नहीं समझ सकते हैं. जब तक भक्ति की विधि को नहीं समझेंगे तो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते. We cannot become freed or liberated from the modes of material nature. हम इस भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं हो सकते. So in this way we are, all of us, extremely fortunate to get this opportunity to receive from our lineage of Vaishnava Acharyas, especially from our founder Acharyas, Divine Grace Srila Prabhupada, this opportunity to make our life perfect by taking up to the process of bhakti. तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु परंपरा से हमारे आचार्यों के माध्यम, विशेष रूप से हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें भक्ति की विधि प्राप्त हुई है, जिसका अभ्यास करके हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं. All of you are very fortunate to come, especially here to Srila Mayapur, where it is said, we were reading that also in the Bhagavatam, most important thing when we come to a holy dham, when we come to a tirtha, is to actually hear from those who are residing or different devotees who are living in the holy dham. तो विशेष रूप से आपसे बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग श्रीधाम मायापुर में आए हैं. और श्रीधाम मायापुर जब हम धाम जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो हम वहाँ कर सकते हैं कि उन भक्तों से श्रवण करें जो आत्म साक्षात्कार युक्त हैं और जो उस धाम में निवास कर रहे हैं. Every single day we should take advantage of hearing from Shastra. This is stressed again and again. That we become
more quickly purified by this constant hearing of transcendental sound vibration. बार-बार इस बात पे ध्यान जोर दिया जाता है कि हम नियमित रूप से प्रतिदिन शास्त्रों से श्रवण करें और इस तरह शास्त्रों से हम श्रवण करेंगे तो हम बहुत जल्दी शुद्ध हो सकते हैं. Yes. So we want to encourage all of the devotees to take up nicely, to take up seriously this process of Krishna consciousness so that you can make your life successful. All of us, we can make our life successful individually, and by doing so, we can be better instruments, we can be assistants in our Vaishnavacharyas in assisting Lord Chaitanya Mahaprabhu in spreading this mission. तो हम सही भक्तों से निवेदन करते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत की विधि को बहुत ही गंभीरता से निष्ठा से ग्रहण करें ताकि आप लोग अपना जीवन सफल बना सकें और साथ ही एक उपकरण बन सकें, एक निमित्त बन सकें श्रील प्रभुपाद और वैष्णव आचार्यों के हाथ में कि दूसरे लोगों का जीवन भी हम सफल बना सकें. This is one of the important instructions that Srila Prabhupada very often would remind his Indian audience whenever Prabhupada was preaching to Indian audience. Bharata bhumite hoila manusya janamajan janma salta kari korapada upakar. Same. Yeah. ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य श्री प्रभुपाद बताते थे जिस रूप से जब वो भारतीयों को संबोधित करते थे कि भारत भूमि का हईला मनुष्य जन्म सार्थक करे परोपकार. So this is our humble request. Actually, persons like myself and other God brothers, the movement, although still young, the movement is going to enter a second phase, is in the process of entering a second phase. Second phase means that very soon, none of the disciples, initial disciples of Srila Prabhupada will be present on this planet. तो हालांकि ये आंदोलन अभी नया है लेकिन एक नए सेकंड फेज में जाने जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनमें से कोई भी उस समय उपस्थित नहीं होगा. Which means that actually it becomes incumbent upon our second and our third generation to take up very seriously this mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, this mission of Srila Prabhupada, so that this mercy can continue to be introduced to as many conditioned souls as possible around the world. तो फिर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वे इस जिम्मेदारी को अपनाएं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं ताकि श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत सारे भक्त जीवों तक पहुंच सके. So I'm actually very pleased. Although I was in Srila Mayapur many years ago. For many years I was away also from Mayapur. More recently I came back and very happy to meet different devotees, many of whom are disciples of His Holiness Bhakti Charu Maharaj. तो बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ. मैं काफी समय मायापुर में बिताया और काफी समय दूर भी रहा मायापुर से, लेकिन अभी फिर से मायापुर में आके बहुत प्रसन्न हूँ. यहाँ अलग भक्तों से मिलके और खासकर शिष्य भक्ति चरु स्वामी गुरु महाराज के बहुत सारे शिष्यों से भी मैं मिला. So we request everyone to kindly take to heart these important instructions given by all of our acharyas, and in this way, as explained by Srila Rupa Goswami, to be effective in the preaching mission, one needs to become very enthusiastic. Utsaha. Enthusiasm is very essential. तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि आचार्यों के जो उपदेश हैं इन्हें हृदय में स्वीकार करें और जिस प्रकार श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को बहुत ही
उत्साहित होना चाहिए। प्रभावी बनना है प्रचार कार्य में भी तो बहुत उत्साहित होना चाहिए। We should be especially enthusiastic to chant the holy name and to induce or encourage as many people as possible to take up to the chanting of the holy name. विशेष रूप से हमें हरिनाम करने के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए और साथ ही दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि वे भी हरिनाम करें, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उत्साही होना चाहिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. I don't know if there's time for questions or not. Yeah, there's another speaker also. We can take questions. You can pick, okay. Until 6 o'clock at least we can So, महाराज किसी बच्चे का प्रश्न हो तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। okay, one hand is hiding behind the cameraman. ये Mic. मैं ये मैं इधर पास आप Hare Krishna Maharaj, thank you for the beautiful lecture. Hare Krishna. Maharaj, I want to ask you, in 1980, can you explain us what had happened? Incident in 1980. Many things happened in 1980. and I don't remember all of them. So, you're talking about the incident in Mayapur, probably? Yes. तो प्रश्न ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि महाराज 1980 में क्या हुआ था, क्या घटना हुई, इस पर बताइए। महाराज आपको तो बता रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं 1980 में हुई थी, मुझे सब तो याद नहीं है, तो ऐसा शायद आप मायापुर की घटना के बारे में पूछ रहे हैं तो 1980 में हुई थी। Yeah, many people ask me that question. Many people ask me that question. बहुत सारे भक्तों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा। So, actually, this was in 1984. तो ये 1984 की बात है। Gaur Purnima had just ended. Just a few days after Gaur Purnima, majority of devotees had left Mayapur and gone to Vrindavan. गौर पूर्णिमा का समापन ही हुआ था और ज्यादातर भक्त मायापुर से चले गए थे वृंदावन की तरफ। And actually, the long building was, of course, well, we call it the long building means the lotus building, which is referred to as a long building. It was still not, the rooms were yet not clean. You know, the devotees had just left like 1 or 2 days. So I decided to go and take rest in one of those rooms because they had fans. तो जो लॉन्ग बिल्डिंग है, ये चक्रा बिल्डिंग है जिसे लॉन्ग बिल्डिंग भी कहते हैं, उसमें जो रूम्स से अभी क्लीन नहीं हुए थे, क्योंकि भक्त लोग अभी गए ही थे, तो महाराज ने निर्णय किया कि एक रूम में जाके थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि उसमें पंखे भी थे। I was at that time living in the basement, not so much ventilation. तो उस समय महाराज बेसमेंट में रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फिर ventilation ही नहीं था। So I thought, let me take advantage of the free rooms available upstairs. तो महाराज ने कहा कि जो ऊपर मुफ्त में भी रूम उपलब्ध हैं, खाली उनका फायदा उठाया जाए। So, yeah, so I went to take rest. This was actually on the 24th of March. तो महाराज वहाँ आराम करने गए, वास्तव में ये 24 मार्च का दिन था। 24th March 1984. So I took rest. That day, actually, I had gone to some village for some preaching, and I came back. I was very tired. I took rest upstairs. तो 24 मार्च 1984 उस दिन महाराज उस गांव में प्रचार करने के लिए गए थे, बहुत थके हुए थे, तो वो ऊपर आराम करने चले गए। And then, approximately around midnight, I guess between 12 and 1 o'clock,
we started to hear some very unusual sound, very loud sound. Yeah. तो आधी रात की बात है, 12 से 1 बजे के बीच की बात होगी कि उस समय हम लोग अलग-अलग बहुत जोर-जोर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी. In India, we hear sometimes, because there are so many festivals, this Kali Puja, this Durga Puja, people throw a lot of firecrackers and make big, big sound. भारत में विशेष हम देखते हैं कि अलग-अलग उत्सव होते हैं, काली पूजा, दुर्गा पूजा, तो लोग बड़े-बड़े पटाखे फोड़ते हैं और बहुत शब्द होता है, ध्वनि होती है. But that day there was no puja. लेकिन उस दिन कोई पूजा नहीं थी. And there were no firecrackers. और पटाखे भी नहीं थे. There were bombs being thrown. बम फेंके जा रहे थे. Yeah, actually, we didn't know, for those who know a little bit, at that time, mainly there was a long building and then the lotus building. So the dacoits, I woke up, other devotees woke up, and we went on the veranda and we could see some lights, some big sound and some big flashes of light. तो उस समय जो लोग जानते हैं वहाँ बहुत लॉन्ग बिल्डिंग थी, छक्का बिल्डिंग और सामने लोटस बिल्डिंग थी, तो और कुछ नहीं थी. तो हम सभी फिर आंगन में आ गए आवाज सुन के और हमने देखा कि कुछ लोग हैं और मशाला हाथ में लेके हैं, खड़े हैं. Yeah, so that was all happening on the south side of the lotus building, south side. तो ये सब जो हो रहा था लोटस बिल्डिंग की दक्षिण भाग की ओर हो रहा था. Hare Krishna. Like that. Thank you. This was not pre-rehearsed. We didn't rehearse this. So, anyways, so I could understand that something is not right, Something is not right, so big sound again and again coming in the middle of the night. तो मैं समझ सका कि कुछ गड़बड़ है, इतना भयंकर शब्द हो रहा है बार-बार अर्धरात्रि के समय. And we were hearing some crying, some shouting, a lot of noise, commotion. कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, बहुत सारी अलग-अलग आवाजें सुनाई दे रही थी. So I was kind of like on the veranda, just like watching, just like in a movie, watching. It was like watching a movie. तो मैं आंगन में था एक तरह से और एक मूवी की तरह मैं बस देख रहा था क्या हो रहा है. So I must have been there a few minutes, and I thought, when I was there, I saw a group of devotees running from the bottom of this long building, running towards the lotus building. तो जब मैं वहाँ कुछ मिनट तक खड़ा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे भक्तों का कुछ समूह जो लोटस बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं. Yeah. So I was just standing there and I thought, well, I should not just be looking at the movie, I should be part of the movie. तो मैं वहाँ देख रहा था, मैंने सोचा कि सिर्फ मूवी मुझे देखते नहीं रहना चाहिए, इसका एक हिस्सा बनना है. So I went downstairs where my room was and I tried to gather a few devotees that something is very wrong, something is happening, and we have to go and see what's happening. Yeah. तो मैं नीचे गया, कुछ भक्तों को इकट्ठा किया, उनको बताया कि कुछ गड़बड़ है, हमें देखना है और समझना है कि क्या हो रहा है. When I went down to the basement, there was one new devotee. New devotee means he was from the Gaudiya Math. And in the Gaudiya Math, actually, it was not unusual. They used to have sometimes some attacks. तो मैं नीचे गया तो वहाँ पे नए भक्त थे बेसमेंट में. नए भक्त मतलब गौड़िया मठ से थे और गौड़िया मठ में इस तरह आक्रमण होना कोई नई बात नहीं थी. As I was trying to get people to come with me, he was telling everyone, don't go, stay in your room. मैं जब लोग इकट्ठा कर रहा था कि चलो बाहर चलते हैं, तो नया भक्त सबको बोल रहा था कहीं मत जाओ, अपने कमरे में ही रहो. Anyways, I think he was the only one who went in the room, and then about 6 or 7 devotees, we left, we started running towards the lotus building. ठीक है, लग रहा है कि वो अकेला अपने रूम में रहा
बाकी सब हम सब 6 भक्त बाहर आए और लोटस बिल्डिंग की ओर भाग रहे थे। I remember I was thinking, what should I hold, because we didn't have any weapons. मुझे याद है मैं सोच रहा था कि मैं किस चीज को पकड़ूं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई शस्त्र तो नहीं थे। So I had a stick. Actually, I had 2 sticks. One stick was from Jaiptak Maharaj, who had injured his knee, and his knee was recovered, so he had given me his stick. तो हमें याद है हमारे पास 2 छड़ी थी। एक छड़ी तो इस समय जयप्रताप साहब महाराज को घुटने में कुछ चोट लगी थी, तो वो चोट ठीक हो गई तो छड़ी उन्होंने मुझको दे दी थी। So I had 2, like what we call walking stick in one hand, and I picked up the locker of my room, as weapon. तो 2 जो चलने वाली छड़ी है वो थी मेरे एक हाथ में और एक हाथ में मैंने ताला पकड़ लिया था हथियार के रूप में। So the noise was still there, commotion, and so we ran and we went around to the south side where all the big noise was coming. तो अभी भी बहुत ज़्यादा ध्वनि आ रही थी, जुलूस हो रहा था, तो हम सब इकट्ठे होके हम जो है लोटस बिल्डिंग के दक्षिण भाग की ओर गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। And the commotion was coming from inside the temple. और ये जो कोलाहल हो रहा था ये मंदिर के अंदर से आवाज आ रही थी। Actually, at that time we had 24-hour kirtan, but the devotees who were doing kirtan, I think, had fallen asleep, and they had, at gunpoint, they were told to bring the key to open. The dacoits forced the devotees to open the door to the temple, ground floor. तो उस समय हम 24 घंटे कीर्तन करते थे, लेकिन शायद वो सो गए थे जो कीर्तन करने वाले थे, और फिर डाकुओं ने बंदूक की नोक पे उनसे कहा कि चाबी लेके आइए ताकि मंदिर के दरवाजों को खोला जाए। So much noise was there. I was thinking that the devotees are fighting with somebody inside the temple. With somebody, with some dacoits. तो इतना शोरगुल हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भक्त लोग अंदर लड़ाई कर रहे हैं कुछ लोगों से। So I was running with these devotees, and then one of the side doors of the temple was open. So my thought was, we must go in the temple to help the devotees. That was my thinking. तो मैं भक्तों के साथ दौड़ रहा था और मंदिर के पास का दरवाजा खुला था, साइड डोर। मेरा मन में विचार था कि मैं अंदर जाना चाहिए ताकि भक्तों की वहां जाके मदद की जा सके। So we started running towards that door to enter the temple. तो हम उस दरवाजे की ओर जाने लगे ताकि हम मंदिर के अंदर घुस जाएं। But at that time I didn't know that actually not all the devotees were behind me. Only 1 or 2 devotees. लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि सारे भक्त मेरे पीछे हैं या नहीं, केवल 1-2 भक्त ही थे पीछे। And at this door there was one dacoit. He was just like guarding at the door. और उस दरवाजे पे एक डाकू पहले से था, मतलब वो दरवाजे की सुरक्षा कर रहा था। And as I was running towards that gate, another dacoit came. और जैसे मैं उस गेट की ओर भाग रहा था तो एक और डाकू आ गया। And it seemed like he was making some signs, waving. और ऐसा लगा कि वो कुछ लक्षण, ऐसे कुछ इशारे कर रहा है। It was very dark, could not see very clearly. बहुत अंधेरा था उस समय, स्पष्ट दिखाई तो नहीं दिया। What he was actually doing was that he took what we call these homemade bombs full of sulfur, which is actually very burning. And so he had this in one of his bags, and he took the bomb and he threw it at me. वास्तव में क्या कर रहा था, उनके ऐसे बनाए हुए बम थे जो एक बैग में थे, उन्होंने वो बम निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। And most of us probably don't have the experience of getting a bomb thrown at us, but when somebody throws a bomb at you at nighttime, you don't really know. So anyways, all of a sudden, I flew up in the air because the bomb hit me.
तो ज़्यादातर लोगों को तो ये अनुभव नहीं है कि नहीं होगा कि बॉम्ब फेंकने से क्या होता है हमारे ऊपर। तो जैसे ही मुझ पे बॉम्ब फेंका गया तो मैं जो है आसमान में उछल गया। Just like accident, most accidents happen very quickly, unexpectedly. ये जैसे एक्सीडेंट होता है, तुरंत होता है, अचानक होता है, तो उस तरह से ऐसा हुआ। So it was like a big shock, and I remember my body just going up and then crashing on the ground. तो ये बहुत बड़ा झटका था। मुझे याद है कि मेरा शरीर जैसे आसमान में उछला और फिर नीचे जोर से गिरा। And the dacoits continued fighting inside for some time. I was conscious. I was very conscious. और डाकू अंदर लड़ते रहे कुछ देर तक। मेरे अंदर चेतना थी, पूरी सोच समझ थी उस समय। And of course, I was bleeding quite heavily. और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। Because the fighting was still going on, nobody could come. None of the devotees could come. और चूंकि अभी भी लड़ाई चल रहा था, तो कोई भक्त मदद करने के लिए भी नहीं आ पाया उस समय। But what I generally share with devotees is that, to me, that experience showed that anyone who, even for a short period of time, chants the holy name in moments of danger, and this is what happened to me, I immediately started chanting very loudly the holy name. लेकिन वास्तव में हृदय से जो मैं भक्तों के साथ भावना शेयर करता हूँ वो ये है कि उस समय मुझे अनुभव हुआ कि जब कोई थोड़ी भी भक्ति में सेवा अच्छे से संपन्न करता है, तो जब खतरे का समय आता है तो वो हरिनाम का जप आरंभ करता है। और उस समय मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने हरिनाम करना शुरू किया। हरि बोल। And I can remember that looking back at, maybe I was chanting for at least 15-20 minutes before the dacoits left, and I can recall it, and I can honestly say that that was the best chanting that I ever performed in my life. तो मुझे याद है कि मैं लगभग 15-20 मिनट तक जप करता रहा, जब तक डाकू युद्ध कर रहे थे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जप था जो मैंने किया। Yeah. When something like this happens for a devotee, anyways, that was my experience. I was not in any anxiety. I was also not in any pain, surprisingly. जब भक्तों में इस तरह कुछ होता है, विशेष रूप से मेरा ये अनुभव था कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कुछ चिंता में नहीं था या कुछ बहुत दर्द का अनुभव नहीं कर रहा था। And so after some time, that's when the dacoits actually, they took away the small deity of Radharani, and our devotees, after they left, they came by my side and took me to the hospital. कुछ समय बाद ऐसा हुआ जब राधारानी की छोटी जो विग्रह है उसको डाकू लोग लेकर चले गए, तो कुछ समय बाद भक्त लोग मेरे पास आए और मेरी मदद करने लगे। So Mayapur had been attacked before also, previously, number of times. तो मायापुर पे इससे पहले भी कई बार आक्रमण हुआ था। And all of us, we will have similar types of situations. However, the process, to me, my experience was that this process of Krishna consciousness actually works. It तो works. इस तरह हो सकता है भविष्य में भी हम पे अलग-अलग घटनाएं आती रहें, लेकिन जो मेरा अनुभव है कि ये कृष्ण भावनामृत की विधि है, ये हमारी मदद करती है, ये विधि कार्य करती है। Yeah. Does that answer your question? What happened in Mars? आपको कृष्ण साहब से क्या हुआ? Any और other? Yes. Yes. Please explain. Many gratitudes for the nectarian and hilarious pastimes also. And my question is that Maharaj, as you said, that one should have to have so much enthusiasm again to
serve this moment of Srila Prabhupada to continue and preach the Krishna consciousness to others. But most of us, we are not getting such associations as we belong to many small temples. And at that time, without this association, by the lack of this association, how can we continue to keep this enthusiasm in ourselves to serve Srila Prabhupada? And as we are feeling today so much enthusiasm by hearing from you like a Maharaj, so how can we continue to keep this enthusiasm in ourselves forever? प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे महाराज ने बताया कि उत्साहित होना चाहिए, उत्साह से भक्ति करनी चाहिए और साथ में उत्साह से प्रचार भी करना चाहिए। लेकिन जब जैसे हम छोटे मंदिर से हैं तो हमें भक्तों का इतना संग प्राप्त नहीं हो पाता है, तो कैसे हम इतने उत्साहित रह पाएं? आज महाराज से श्रवण किया तो बहुत सारा उत्साह प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब असंग नहीं होता है तो कैसे हम आगे बढ़ें, जारी रहें, प्रचार करें और खुद की भक्ति भी अच्छे से कर पाएं? We were mentioning a little earlier that without the association of Vaishnavas, without taking advantage, sometimes we may have that association but we're not taking advantage. It is only possible to develop this enthusiasm by this constant association with devotees. हम कुछ समय बता रहे थे कि भक्तों के संग है उसका इतना प्रभाव होता है। कई बार होता है भक्तों का संग उपलब्ध भी होता है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते हैं, तो ये केवल भक्तों के संग के माध्यम से ही संभव है कि ये उत्साह हम बना पाएं और भक्ति में आगे बढ़ पाएं। Yes, it is nice to explain, right? Krishna Bhakti Janmamul Hoy Sadhu Sangha. The appearance of bhakti or the unfolding of bhakti, the birth of bhakti takes place especially by association, and also the end result, which is development of love of Krishna, Krishna Prema, is also happening by the same principle. That same association we need to continue. और इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो प्राकट्य होता है, कृष्ण भक्ति का जन्म होता है, वो भक्तों के संग नहीं होता है, और अंतिम जो फल है भक्ति का कृष्ण प्रेम, वो भी भक्तों के संग के माध्यम से ही प्राप्त हो पाता है। And it is not, sadhu sangha is not only limited to individual person. We get sadhu sangha by hearing from Shastra. We get sadhu sangha by hearing, for example, lectures of other Vaishnavas. In so many ways we can nourish our bhakti. We need to continue on a daily basis to nourish, just like we nourish our body, we need to nourish this Bhakti Lata Beach. तो साधु संघ का अर्थ केवल यही नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से संग प्राप्त हो, हम शास्त्रों से श्रवण करके भी, वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करके उनके प्रवचन सुन के भी संग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें दिन प्रतिदिन अपनी भक्ति लता बीज का सिंचन करना है, श्रवण करके भक्तों का संग लेके। And Prabhupada would explain the fundamental, most essential aspect needed for all of us is to be very sincere in wanting to become devotee, in wanting to advance in Krishna consciousness. Sincerity of heart is very important because Krishna, He knows what is in our heart. तो श्रील प्रभु बताते हैं कि बहुत ही आधारभूत सिद्धांत है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कि हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। कि कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं और वो जानते हैं कि हम हृदय में क्या चाह रहे हैं। Yes, and we simply have to develop that conviction, very strong conviction that the development of Krishna consciousness in ourselves individually, as well as the preaching of Krishna consciousness, is the most important thing in our individual life. हमें दृढ़ निश्चय विकसित करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना व्यक्तिगत जीवन में और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना,
ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Yes. Any other? और कोई प्रश्न? नवीन प्रभु का प्रश्न। लेफ्ट साइड। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. I really accept my apologies. It was a real privilege to hear from such an mature devotee. We are very privileged. Actually, my one question is, I am a grihastha, like so many other devotees are here, and just from hearing your vast experiences, and just want selfish question. It's a selfish question. We have some limited time, so how can we serve effectively in limited time? Kindly guide us. हरे कृष्णा। तो प्रभु का प्रश्न है कि महाराज आप जैसे परिपक्व का श्रवण करना हमारे लिए बहुत ही विशेष उपलब्धि है, सौभाग्य है। क्योंकि जैसे मैं गृहस्थ हूँ, बहुत सारे भक्त यहाँ उपस्थित हैं, वे गृहस्थ हैं, तो एक थोड़ा स्वार्थी प्रश्न का हमारा समय सीमित है, तो सीमित समय में हम कैसे अधिक से अधिक सेवा कर पाएं, विशेष सेवा कर पाएं, इस बारे में मार्गदर्शन। Regardless of which ashram, grihastha is ashram. There are 4 ashrams. Whole Vedic culture is based on understanding and taking advantage of ashram. Ashram means the primary focus is spiritual development, spiritual emancipation. आश्रम जैसे गृहस्थ एक आश्रम है, 4 आश्रम है, तो वैदिक संस्कृति का जो पूरा जो प्रणाली है वो ये है कि हम आश्रम का महत्व समझें और उसके अनुसार कार्य करें, और किसी भी आश्रम का मुख्य जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक शुद्धिकरण, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना। Srila Prabhupada used to explain in our Shastra, also explains that we should try to minimize our material activities. We should try to increase the amount of time, especially in hearing, very important. Prabhupada mentions especially for householders, special instruction for householders. Householders should go on again and again and again hearing on a daily basis from Shastra. Then automatically it will happen. श्रील प्रभुपाद समझाते थे और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें हमारी भौतिक गतिविधियों को कम से कम करके आध्यात्मिक अनुशीलन, विशेष रूप से श्रवण बहुत ही ज्यादा करना चाहिए। विशेषकर गृहस्थों के लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है कि श्रवण 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 अधिक से अधिक करें, जिससे कि हम आध्यात्मिक मार्ग को समझ पाएंगे, अपना पाएंगे। It is a very big challenge, undoubtedly, in the modern day society in which we are living, where all of us, we are like having a crisis in terms of time, no time, we're suffering. But if we are very determined, we can learn to manage our time so that we give as much, some minimum amount of time. Absolutely, we must give every day. ये एक बड़ी चुनौती है वास्तव में कि आज के आधुनिक समाज में हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। ये एक समस्या है, किसी के पास समय नहीं है, समय उपलब्ध नहीं है। यदि हम वास्तव में हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो हम अपने समय को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम समय को प्राप्त कर पाएं और कृष्ण भक्ति से लगा पाएं। Yes, if one is actually very determined, we have to become determined. We have to become serious. We have to be very sincere. If these things are there, Krishna will help us to find time to advance and progress in Krishna consciousness. तो हमें बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए और कृष्ण भक्ति के लिए गंभीर होना चाहिए। जब कृष्ण इस तरह गंभीरता देखेंगे तो कृष्ण मदद करेंगे कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, उन्नति कर पाएं। Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for your kind words. Hare Krishna. बहुत धन्यवाद महाराज आपके
मार्गदर्शन के लिए। और का प्रश्न है, आप बता सकते हैं? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हो रहे हैं, आपसे सुनने को मिल रहा है। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि आप सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी से कब मिले और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? Maharaj, we are very fortunate to hear from you. So my question is, when did you first had a meeting with Srila Prabhupada, and what was your response or reaction and interaction during that meeting? The vast majority of disciples of Srila Prabhupada never had a dialogue or exchange with Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके साथ श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत आदान प्रदान चर्चा हुई नहीं। I have some god brothers and god sisters who never even physically saw Srila Prabhupada. मेरे कुछ ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जिन्होंने कभी श्रील प्रभुपाद को आमने सामने देखा ही नहीं। Of course, I first met or saw Srila Prabhupada in 1974 in New Vrindavan when Prabhupada was visiting with so many other devotees. That's where I got Harinam Diksha. That was my first, you can say, meeting or seeing of Srila Prabhupada. तो निश्चित रूप से मैं श्रील प्रभुपाद से 1974 में न्यू वृंदावन में मिला अमेरिका में, जब श्रील प्रभुपाद बहुत सारे शिष्य वहाँ आए थे और वहाँ ही भेंट हुई और वहाँ ही मेरे को हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुई। And by that time I had been a devotee for about 6 months. उस समय मैं लगभग पिछले 6 महीनों से विष्णु भक्ति का अभ्यास कर रहा था। It is a little difficult to explain, but in those days, at that time, because the movement was still in its early beginning, not early beginning, but Prabhupada was still physically present. There was a kind of energy. There was a kind of very profound atmosphere created by the mere presence of that personality whom we know as Srila Prabhupada. तो ये शब्दों बताना बहुत कठिन है, लेकिन जैसे आंदोलन उस समय काफी नया था, एकदम नया नहीं था लेकिन काफी नया था, 6 साल हुए थे और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद जी उपस्थित कारण वातावरण में एक शक्ति थी, एक अद्भुत एक एहसास था उस श्रील प्रभुपाद जी की उपस्थिति के कारण। Srila Prabhupada, we could say, he touched the heart, and he continues actually to touch the heart of so many people through his instructions and through all of the wonderful, unparalleled activities that he performed. So just being part of that in those years when Prabhupada was physically present, I, like so many of my god brothers and god sisters, we very easily, very naturally surrendered to that person, Prabhupada, and to the teachings he was giving us. श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के हृदय को छुआ और अभी भी वो अपनी वाणी को हम हृदय को छू रहे हैं। तो हम सभी जो गुरु भाई गुरु बहन थे, श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व से, उनकी वाणी से आकर्षित होकर हम सभी उनके प्रति शरणागत हो गए। I never had any personal exchange with Srila Prabhupada. मेरा कभी भी श्रील प्रभुपाद के साथ कोई व्यक्तिगत आदान प्रदान नहीं हुआ। As I mentioned before, actually, in the early days, of course, most devotees had more of an opportunity because only a few devotees were there. निश्चित रूप से जब शुरुआती दिन थे तो भक्तों के पास ज़्यादा सुविधाएं थी, क्योंकि उससे बहुत कम भक्त थे श्री प्रभुपाद के आसपास मिलने के। But as the movement began to expand, it was more and more like difficult to actually get
that kind of close association with Prabhupada. जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया वो और कठिन होता चला गया कि श्री प्रभुपाद को अपना व्यक्तिगत संग हमको प्राप्त हो पाए पास में. But the influence of the pure devotee is such that coming in contact with his representatives, those who are close to him, was sufficient to actually give us the needed inspiration to actually dedicate our lives to this movement. शुद्ध भक्त का इतना प्रभाव होता है, शुद्ध भक्त के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका भी जब हमें व्यक्तिगत संग प्राप्त होता है तो उससे हमें इतनी प्रेरणा प्राप्त होती है कि पूरा जीवन शिरों सेवा में समर्पित कर सकें. So it comes back to this most important point, which is very fundamental in our Krishna consciousness, the question of sadhu sangha association. फिर से वही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कृष्ण भावनामृत में हमारा आधारभूत सिद्धांत है कि साधु संग भक्तों के संग को प्राप्त करना. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो. हमारे पूरे ग्रुप को आशीर्वाद दीजिए कि हम श्रीला प्रभुपाद के मार्ग के दर्शन जो किया है उसके अंदर आगे बढ़ सकें. Maharaj, thank you very much. Please God bless all of our group so that we can follow the instructions of Srila Prabhupada. Hare Krishna. Vivo. कोई प्रश्न? Okay. So, there is a question. Maharaj, generally the enthusiasm which we have when we come to Krishna consciousness, enthusiasm when we come to Krishna consciousness, Yes. we have lot of enthusiasm, but as we sometimes as we pass some years, It seems to dwindle a little bit. Huh? It dwindles sometimes a little bit. Dwindles and we lose faith in the whole activities of Krishna consciousness, and we don't understand what purpose we are living with, or the goal is not so clear, and so many questions come. Then we sometimes continue, but not with the same enthusiasm, or we don't able to contribute that much which we thought of. So you please guide that you are continuing, so how we can follow in your footsteps. Yes. Can you translate your question? प्रश्न ये है कि जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, कई बार हमारा उत्साह शुरू में बहुत उत्साह रहता है, धीरे धीरे जैसे हम समय बिताते हैं तो हमारे उत्साह में कमी आती है. कृष्ण महाराज की जो मूल गतिविधियां हैं, श्रवण कीर्तन पुस्तक करते हैं, उसमें हमारी कमी आती है. कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं. तो हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन हम उतना योगदान नहीं कर पाते, उतनी उन्नति नहीं कर पाते. तो कैसे हम महाराज के चरण सेवा का अनुसरण करें? We need to understand that our movement, Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement, the movement that Srila Prabhupada established, International Society for Krishna Consciousness, is primarily a preaching movement. Yeah. हमें ये समझने की आवश्यकता है कि श्रील प्रभुपाद का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु आंदोलन का सूत्रपात किया है, ये मुख्य रूप से प्रचार का आंदोलन है. So preaching movement means that we need to become very conscious as possible about this most important preaching mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada to bring this knowledge and this Krishna consciousness to as many people as possible, because otherwise people simply will continue to be misled, misdirected, and to suffer in this material world. Yeah. तो प्रचार आंदोलन का अर्थ है कि हम बहुत ज़्यादा जागृत रहें, जितना संभव हो उतना हम जागृत रहें, सचेत रहें कि हमें इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है. और वरना इस जगत में जो लोग हैं, जो पथभ्रष्ट हैं, और वे निरंतर कष्ट भोगते ही रहेंगे. Yes. So the expression is we need to keep ourselves in the fire of preaching. We have in the West this expression to become fired up. Fired up. Fired up means like enthusiastic. How to maintain this enthusiasm, which is your question,
One of the important practices, of course, has to do with developing, maintaining, and increasing, improving our basic sadhana. Sadhana is absolutely essential and is the basis of whatever else we may be doing. तो एक कहने का अर्थ ये है कि हमें इस प्रचार की आग को आगे बढ़ाना है. इस तरह विदेशों में ये एक्सप्रेशन है फायर्ड अप, तो ये है. और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमें मेंटेन, हमें इसको स्थिर रखना है, विकसित करना है और सुधारना है हमारी साधना के मानदंड को. जितना हम साधना को सुधारेंगे, बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो निर्भर करता है हमारी साधना कितनी अच्छी है. Actually, we need to receive also the special mercy of Krishna and the special mercy of his devotees. That special mercy comes, that's nicely explained in the Bhagavatam. वास्तव में हमें कृष्ण और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करना है. कैसे विशिष्टता मिलेगी ये भागवतम में बताया गया है. In the first canto of the Bhagavatam, second chapter, entitled Divinity and Divine Service, some very jewel-like instructions are given there and summarize actually the whole process of how to become firmly situated and always enthusiastic in preaching. तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के जो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में दिव्यता एवं दिव्य सेवा में कुछ ऐसे हीरे मोती की तरह जो उपदेश दिए गए हैं, पूरी विधि बताई गई है कि कैसे उत्साहित रहा जाए और कैसे इस विधि में आगे बढ़ा जाए. And it begins with a very well-known verse, often quoted by Srila Prabhupada, known to many devotees, Srinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Ridyantastoya Badrani Vidunuti Surisatam. That's the beginning. And then it leads one to a very important point that I'll just explain in a few seconds. तो इसमें जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कई बार श्लोक द्वारा बताते थे. कई भक्तों को याद होगा, श्रीमतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यंतय भद्राणि विदुनोति सुनिश्चितां. तो इसके आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अभी कुछ देर में बताऊंगा. Our lack of enthusiasm is often due to different connections or influence of some of the modes of material nature. That's our problem, all of us. हमारा जो उत्साह में जो कमी आती है उसका मुख्य कारण रहता है कि हमारा अलग-अलग संपर्क है, अलग-अलग तरह से अलग-अलग गुणों का प्रभाव है, जिसके कारण हम हर जगह भटक जाते हैं. So to actually become very enthusiastic, to actually receive that special mercy from Krishna, one has to become situated at least on the level of goodness, the material mode of goodness. तो वास्तव में उत्साहित होने के लिए या कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम सतोगुण तक आना आवश्यक है. Yes. And that mode of goodness, Prabhupada explains, is when one becomes very serious and those who have taken vows, they are following those vows very strictly. That means they will very quickly reach this level of nistha, steadiness, strong conviction in Krishna consciousness. श्लोक बहुत समझाते हैं कि जो भक्ति में बहुत गंभीर हैं, जो उन्होंने व्रत लिए हैं, उनका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वे शीघ्र ही जो है सतोगुण के स्तर पे पहुंचेंगे, यानी कृष्ण भक्ति में उनकी दृढ़ निष्ठा स्थापित होगी. And it is only when one is situated in this mode of goodness that one experiences peace of mind. One becomes very peaceful and very happy. जब कोई सतोगुण के स्तर पे आता है तब वो मन की शांति का अनुभव करता है, वे प्रसन्नता और शांति का अनुभव कर पाता है. So that another verse in that series of verses is nicely explaining what takes place. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayati. Being situated in the mode of goodness, having
a peaceful mind, we can nicely engage in activities of devotional service. तो श्लोकों की इसी श्रृंखला में आगे श्लोक महाराज ने बताया कि इस तरह सत्गुण में स्थापित होकर प्रसन्न मन से, शांत मन से वे भक्ति योग के कार्यों में अपने को लगा सकता है। And Bhagavad Bhakti Yogata will lead us to the next stage. Bhagavad Tattva Vijnanam. Bhagavad Tattva Vijnanam we all need. We need to go beyond simply Jnanam. We have to come to the level of Vijnanam. और आगे बताया गया है कि आगे इससे क्या होता है जब भगवत भक्ति कार्य में लगते हैं तो भगवत तत्व विज्ञान हम सभी को ज्ञान के स्तर पे नहीं बल्कि उसके आगे जाने की आवश्यकता है। Yes. वो है विज्ञान का स्तर। And that Vijnanam actually comes from Krishna. Krishna is the one who will help us to understand, who will give us different depths of realization, and in this way enthuse us to engage in more and more activities of devotional service. और वो जो विज्ञान है वो कृष्ण से आता है। कृष्ण जो है हमें मदद करेंगे और हमको साक्षात्कार की गहराइयां प्रदान करेंगे, इससे हम और तीव्रता से कृष्ण भक्ति के कार्य में अपने को लगा पाएंगे। Yes. So one of the most important instructions, of course, given by Srila Rupa Goswami, Prabhupada used to say, we should go on again and again hearing and reading these two books, Nectar of Devotion and also Nectar of Instruction. तो श्री रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बार-बार इन दो पुस्तकों का श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्री उपदेशामृत और श्री भक्ति रसामृत। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki, Jai Sri Prabhupada ki, Jai Sri Mayapur ki, Gaura Pimanande. एक महाराज ने केवल एक बार उज्जैन में गए थे, लेकिन एक बार वचन दिया अभी उज्जैन है। उनको ज्यादा जल्दी नहीं उज्जैन है महाराज। So Maharaj very busy, so he cannot refuse our request. Otherwise, he is not giving any more time. He has so many projects. It is not similar to us. I heard from the devotees, like Guru Maharaj, so about his glories. So actually, devotee is known by his activities, his services. He has done his doing. He will be written in the golden letters in the history of Krishna. Bhakti Raghav Swami Maharaj ki Krishna Bhagavad ki